हिप हॉप की बात करते हैं तो वैसे ही बहुत हम लोगों को बहुत टाइम पहले से ऐसा होता था कि यार इंडिया में हिप हॉप ठीक है बट देन लास्ट फ्यू इयर्स जिस तरीके से हमने हिप हॉप में जो झंडे गाड़े हैं लाइक दो वर्ल्ड चैंपियंस जीते हैं और अब लोग यहाँ आते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात। रिकॉर्ड्स हमने तोड़े, वहाँ पे हमने गिनेस रिकॉर्ड हमने सेट किया है. सो ऑब्वियसली दैट वाज द फर्स्ट टाइम on a stage that where we could set a Guinness record. This year we... Oh my God! Whoa! Hi Remo sir, how's it going? So good to see you. I'm like, very good. Oh, very good. All right. Guys, it is now time to make some noise for the legends who define hip-hop's noise. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Ultimate masters of the game. The pillars of dance, the ones who define fame. Judges के judge, style के सरताज, the heartbeat of hip-hop. Remo D'Souza and the queen of grace, diva supreme, आंखें संगीन, every dancer's dream, Malaika Arora. You both look lovely. रेमो, मलाइका, what a start! ये तो मतलब मजा आ गया देख के रेमो सर. Absolutely यार, मतलब सीजन 2 है. मैं तो बहुत कमाल किया था लेकिन सीजन 2 में आए हम लोग वापस. I'm very happy and मलाइका is with us and बहुत कुछ नया आने वाला है. तो नया तो ये दिख गया, पहला नया and बहुत कमाल होने वाला है because see हिप हॉप की बात करते हैं तो वैसे ही बहुत हम लोगों को बहुत टाइम पहले से ऐसा होता था कि यार इंडिया में हिप हॉप ठीक है बट देन लास्ट फ्यू इयर्स जिस तरीके से हमने हिप हॉप में जो झंडे गाड़े हैं लाइक दो वर्ल्ड चैंपियंस जीते हैं और अब लोग यहाँ आते हैं. वाह क्या बात है, क्या बात है. Fantastic scenes. Before you say anything, can we please have on the stage the producer of the show from Frames, Ranjit Thakur. Can you please join us? Hi Ranjit, how are you? Lovely, love the show, yeah, love the show. So Remo sir, you know, you are one of the pioneers of hip hop dance scene in India and inspiring, you know, so many dancers in the country. Season 2 तो आ गया है और आपने इतने धमाकेदार एंट्री कर दी है. प्रोड्यूसर साहब, ये मतलब ये कुछ मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ तो आपने छोड़ा होता. मैं आगे कैसे लेकर जाऊंगा इस शो को जब आपने इतनी धमाकेदार एंट्री कर दी है. बट मैं रंजीत के बारे में कह दूं कि हम दोनों ने एक साथ ही शुरू किया था और आज 16 साल पूरे हुए हैं. पता है आपको? पहला शो हमने जो किया था वो 16 साल पहले किया था और आज 16 साल हमने कंप्लीट किया है फॉर डांस जो हमारे देश में इतना आगे गया. तो he is also one of the big reason. And Malaika, you know, Hip Hop India season, the Guinness Book of World Record, है ना, एक opinion जो makes hip hop stand out in India. किस वजह से आपको लगता है that hip hop really has sealed the deal? Firstly, good evening everybody. बहुत अच्छा लग रहा है कि I will be part of Hip Hop India Season 2. आपने तो धमाल कर दिया Season 1 में. आपने records हमने तोड़े, वहाँ पे हमने Guinness record हमने set किया है. So obviously that was the first time on a stage where we could set a Guinness record. This year we will make it bigger and better. बहुत सारे records हम तोड़ेंगे, बहुत सारे options हमें मिलेंगे जहाँ पे we will make it bigger and better. But let's not forget the king of hip hop is here, Remo sir, and he truly makes all that difference. He truly is the one who paves the way for hip hop in this country, and to see so many kids out there जो hip hop करना चाहते हैं, जो underground dance करना चाहते हैं, I think he is the person who they all look up to. So I'm really happy to be sharing stage with him this year. Of course, let's not forget Ranjit sir, who we've all had the opportunity to work with time and time again, who's actually handheld us and told us ऐसे करना है, वैसे करना है, अगर आपको dance show करना है तो आपको literally he's been like that. He's been a father figure to all of us. Sorry I'm saying that, but that is the truth. In fact, we don't call him Ranjit sir, we call him Thakur. That's how we address him, because he truly has been like that. So thank you so much to you and to Frames for making this journey so amazing. We're looking forward to a new journey, which is Hip Hop Season 2. Fantastic. So yes, Fantastic. I'm really happy to be seeing hip hop come into this country and make such a huge difference. I know. Amazing. And one more time, we're going to kill it. So guys,
we're proud to have Realme on that note as a sponsor for the second time on Hip Hop India. Season 2 is planned for launch in March 2025. We are partnering with many of you here today and are excited by the many great opportunities to celebrate your brand in this very unique dance show. And now, Ramoso, Malaika, let's take a Realme selfie and let's capture this beautiful moment. And for this, I would like to call upon the stage Mr. Manish Rana, Director of Media, Realme India. And I would also request Girish Prabhu, Karan Bedi, Amogh Dusad, and Aruna Daranani to please join us on the stage. How is that? Remo sir, do you have the phone? Wow, kya baat hai. मैं फोन लेके घूमता सर. Looking forward to season 2. Let's have a Realme selfie. How are you, buddy? Good to see you. Season 2! Fantastic! Thank you so much. Thank you. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सबके लिए. Thank you so Thank much you for guys. joining Thank you so in. much. And a quick picture for everyone here. 3 of you. Yes, please. Yes, please. रियल में कह रहा हूं आपने हमें मोहब्बत दिखाई है और हमने आपको. So now let's give you an exclusive sneak peek into what's happening in Hip Hop India Season 2. After the quick picture, get ready to witness the fire, the moves, and the magic. Just Thank give me you. a second. So take a look, ladies and gentlemen. Hip Hop India, the biggest hip hop show in the country. क्या बात है सर, इतना धमाका ये जो आपने किया है सर. Let's have a picture one more time together. Rajit sir, please come now. ठाकुर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? आपने तो फ्रेम सेट करने हैं. कमाल है. सर, वर्कआउट. मुझे चाहिए डिसिप्लिन आपसे. ओके सर, आपका सोलो सर, ऐसे कैसे होगा सर? अरे सर कमाल है सर, ऐसे कैसे होगा सर? Thank you so much Ranjit, thank you so much Malaika, and thank you so much Remo sir. It's always lovely to see you. Thank you so much.